Yes, hello Amit, welcome on YourPedia platform and let's start your heat transfer snap for your BPSC interview for the post of lecturer in various polytechnic colleges of Bihar. Thank So you, sir. Amit, what do you know about heat transfer? Sir, heat transfer is a form of energy which occurs due to the temperature difference only. Mhm. This is said to be the heat transfer. This only you know about heat transfer. And in heat Mhm. transfer subject, we studied about the at what rate the heat will be transferred, either by the conduction, convection, or radiation. Acha, for example, if I will give you a kind of hot iron. Hot iron, yes, If sir. you will take 1 kilowatt hot iron and if you will place that hot iron, 1 kilowatt hot iron vertically in a particular room. Yes, sir. So how the heat transfer is going to take place? Yes, sir. So by the convection, the heat transfer will take place. Okay, forced convection or free convection? Sir, free convection. Free convection. Yes, sir. So the hot iron is of 1 kilowatt. Okay. Yes. So how Yes, you sir. will evaluate the H value experimentally? Yeah, experimentally. Sir, So proportional heat transfer what? coefficient, Yeah. how you will Yeah, evaluate sir. that? Sir, 1 kilowatt equal to simply we can find out, sir, HA into delta T from there. So that is applicable for both forced and free convection. Yes, sir. From there we can find out, sir, changing temperature is the temperature of the hot iron and the Is there any assumption required to use that expression? Yeah, assumption. When you can write Yes, 1 kilowatt equal to HA delta T. So I think for a steady state. For steady state. Okay. So how you will ensure that the hot iron is in steady state? Sorry, sir. Now, how you will check? Let's suppose there is some system. How you will check the system is in steady state or not? Sir, I think, sir, जैसे 1 kilowatt जो हमारा electricity आया है, and this will totally rejected to in the atmosphere, and there will be no accumulation. Therefore, I said that 1 kilowatt is equal to the convection heat transfer. This is HA into delta T. Acha, you know about generalized heat conduction equation? Yes, sir. How we derive that equation? What is the basis to derive that equation? Yes, sir. For a slab or for a cylindrical body. Cartesian coded. Okay, sir. Okay. Sir, first of all, what we take a small element of the slab, and after that we have find out the net heat input, and plus what will be the heat generated in the body, and this will equal to change in internal energy. And this will be the applied for the x direction, y direction, and z direction. And after that we take the one example, the material is homogeneous and isotropic, and then the thermal conductivity in x, y, and z direction will be the same. From after that we are getting the general equation in a Cartesian coordinate. So net heat input plus heat generated in the body, and this will be equal to the per unit volume, sorry, and this will equal to change in internal energy of the body. Amit, what is conductivity? Thermal conductivity. Yes, sir. So thermal conductivity is a property of the material which tells about the ability of the material to allow the heat energy to get conducted to it. This is said to be the thermal conductivity. So gases are also having some conductivity? Yes, sir. Gases have, but it have very low thermal conductivity. So how the conductivity of gases changes with the increase in their temperature? So it will going to be increased. Why? Because, sir, when we increase the temperature, yeah, from also we know that
when we increase the temperature, when the high velocity high temperature molecules is collide with the low temperature low velocity, and due to the molecular collision, the temperature of the body is increased, and hence from there we can say, and heat conductivity is going to be increased, and therefore we can say that when we increase the temperature, thermal conductivity is going to be decreased for the gases. Amit, what is Grashof number? So Grashof number is the ratio of the buoyancy force to the viscous force. This is said to be the Grashof number. Buoyancy force to the viscous force. What is the significance of that number in heat transfer? Sir, it tells about the dominance of the buoyancy force over the viscous force, and also it replaces the Reynolds number. Sorry, it also replaces the sorry, so 1 minute, sir. It also replaces the Reynolds number with Grashof number in free convection. So, okay, the arrangement we have considered earlier, a kind of hot iron standing vertically in a room. For example, for that case, we are interested in obtaining the value of Grashof number. Yes. तो कैसे obtain करोगे आप? Yes. Sir, by using the formula we can find out. Which formula? Sir, G beta into LQ into change in temperature by viscosity का square, kinematic viscosity का square. G beta what? G beta into LQ into change in temperature by kinematic viscosity का square. You are missing some term. What about temperature difference? Yes, sir, I have written that. Can I? Is it visible, sir? Not very clear. Fine. So at what temperature you will obtain the properties, Amit? Sir, and what will be this L in this case? So this will be the characteristic length, and all the fluid properties are obtained at the bulk mean temperature. So what will be the characteristic dimension in that case? Sir, I think length of the hot iron. Length? Sir, I'm not sure, but I think so, sir. Length of the iron. For when we analyze different, kind of fins arrangement, yes, a kind of default case we consider, known as fin tip insulated case. Yes, sir. So why that case is important for us, and why we consider that case as a kind of default case, and what are the boundary conditions for that case? Sir, boundary simply first boundary condition we have taken that at x equal to 0, the temperature is equal to the wall temperature, and second one at x equal to L, dt by dy equal to 0. Yes, sir. 1 minute, sir. Dt by dx at s equal to L equal to 0. That will be the two boundary conditions. First one, sir, at x equal to 0 and t equal to tw, and second one at x equal to L, dt by dx equal to 0 at x equal to. Now what about the significance of that case? Sorry, sir. Sorry. Okay. Amit, shape factor क्या होता है? So shape factor we can say that if you consider any two body, that is, let's suppose A and B, and let's suppose body A is emitting the radiation. Let's suppose it is emitting 10 kilowatt of radiation energy, and if body B is incident on the body B is 8 kilowatt,
then the shape factor will be 8/10. शेप फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? सर shape factor, सर आई थिंक सर शेप फैक्टर सर शेप पे डिपेंड करेगा, बॉडी का शेप कैसा है। जैसे लेट सपोज एक बॉडी मैंने ए बॉडी को मैं जैसे छोटा रखा हूँ सर, और उसका लेंथ मतलब छोटा है, और दूसरा बॉडी बी में बहुत बड़ा लेंथ रखा हूँ, तो ये हो सकता है कि जो बॉडी ए जो हमारा है वो मतलब कि उस पर ज्यादा रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट करेगा बॉडी बी पे। अगर फिर उसी का मान लीजिए अपोजिट कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी बी पे जो हमारा रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ से मैं सर अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। चलो, हैजलर चार्ट्स क्या होते हैं? सर हैजलर चार्ट के बारे में अभी मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसा कि पता है सर, जहाँ पॉइंट नंबर आई थिंक 1 होता है उस कंडीशन में हैजलर चार्ट का यूज करते हैं। आई थिंक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्लियरली अभी याद नहीं है सर। What is NTE of a heat exchanger, Amit? NTU is just simply sir ratio of the two things. In numerator is the product of the overall heat transfer coefficient and the heat transfer area, and in denominator there will be the minimum heat capacity. चलो ठीक है अमित, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी। यस सर। अमित मेरे ख्याल से ज्यादातर क्वेश्चन तो आप आंसर कर पा रहे हो, 2-3 क्वेश्चन ही आपने जो मिस किए हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ हीट एनर्जी इनसाइड द बॉडी। Whatever energy is entering, that is equal to energy leaving. dE by dt of the control volume or system is 0. तो मतलब स्टेडी स्टेट में जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो चेंज नहीं करेंगे विद टाइम। यस सर। व्हाट यू कैन से कि सर आई विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ द आयरन। अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इट मींस द आयरन इज इन सम स्टेडी स्टेट। यस सर। अगर वो वेरी कर रहा है फॉर एग्जांपल, यस सर। अगर वो वेरी करेगा देन वी कैन नॉट से कि दैट इज इन स्टेडी स्टेट। ओके सर। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि कैसे इंश्योर करोगे कि वो स्टेडी स्टेट में है। फॉर दैट व्हाट यू कैन से कि सर आई विल मेजर द टेम्परेचर। व्हाट द आंसर अमित? यस सर। यस सर। चलो देखो, टिप इंसुलेटेड का केस इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? यू नो फिन के लिए हमारा जो टिप का एरिया होता है, टिप जो होती है, यू नो वी यूज वेरी लॉन्ग वाइड फिन। ओके, why? Because with that kind of arrangement we get higher effectiveness. तो बहुत ही थिन फिन हम यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोवाइडिंग ए सिंगल फिन वी यूज मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड फिन। तो फिन की थिकनेस बहुत कम होती है। थिकनेस बहुत कम है, व्हाट इट मींस द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप विल बी नेग्लिजिबल। बहुत नेग्लिजिबल हीट ट्रांसफर होगा एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द टिप, सरफेस एरिया ऑफ द फिन, because the tip area is very small. Are you getting it? So that's why, because due to very negligible heat transfer from the tip, we can assume it like a fin tip insulated case. ठीक है अमित? ओके सर। चलो मेरे ख्याल से बाकी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, वो आप आंसर कर रहे थे। क्रैश ऑफ नंबर, ठीक है ठीक है। बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप ठीक लाइन पे आंसर कर रहे थे, और ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस इज लुकिंग फाइन अमित। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। अभी इंटरव्यू का डेट आ गया है? सर इंटरव्यू का डेट मुझे फिक्स है, आई थिंक 15 अप्रैल से होगा सर वो। 17 अप्रैल से। चलो ठीक है, मेहनत करते रहो। आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है, आपको तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। कई बार जरूरत से ज्यादा टाइम मिल जाता है तो वो हमें परेशान भी करता है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से मोर देन लास्ट 8 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, 7-8 मंथ से। कब से प्रिपेयर कर रहे हो? यस सर, सर बहुत पहले से ही कर रहा हूँ। हाँ तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब इंटरव्यू डेट आ गई है तो मेहनत करो दोबारा से, है ना, पढ़ना शुरू करो। यू आर डूइंग पीएचडी, दैट विल आल्सो गिव यू द एडवांटेज फॉर दिस टीचिंग पोस्ट। और कॉन्फिडेंट रह के जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहो अमित। ओके सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।